Hello guys, welcome back to my channel. So this is CA Archana Agarwal. Last revision lecture में हमने chapter number 12 का first part किया था, उसमें half chapter ही cover हो पाया था. अब remaining part हम इस chapter में करने वाले. So conversion of company into LLP. जब आप convert करते हो company को LLP में, तो क्या procedure होता है जो आपको follow करना होता है? तो आपको obtain करना है DIN for those designated partners जिनके पास DIN नहीं है. बोर्ड मीटिंग बुलाओगे आप डायरेक्टर्स की, रिजोल्यूशन पास करोगे फॉर कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी, रिजोल्यूशन पास करोगे और ऑथराइज करोगे डायरेक्टर को कि वो अप्लाई करें फॉर नेम ऑफ एलएलपी, एप्लीकेशन फाइल करोगे फॉर नेम अवेलेबिलिटी ऑफ एलएलपी, ई फॉर्म एप्लीकेशन फाइल करोगे एलएलपी 1 में विद आरओसी, अटैचमेंट्स लगाओगे बोर्ड रिजोल्यूशन में, पास्ड बाय कंपनी, अप्रूविंग द कन्वर्जन इनटू एलएलपी शैल बी attached with the aforesaid form. Obtain करोगे name approval certificate from ROC. Draft करोगे limited liability partnership का agreement. Contents क्या होंगे agreement के? Name of LLP, name of partners and designated partners, form of contribution, किस ratio में आप share करोगे profits या losses, profit sharing ratio, rights and duties of partners, proposed business, rules for governing LLP. फाइल करोगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, फाइल करोगे फॉर्म फिलअप विद आरओसी अलोंग विद द फॉलोइंग: प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी, सब्सक्रिप्शन शीट साइंड बाय द प्रमोटर्स, डिटेल ऑफ एलएलपी और कंपनी इन विच पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इज अ डायरेक्टर पार्टनर. फाइल करोगे एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन, फाइल करोगे ई फॉर्म 18 विद आरओसी, किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ: स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स एंड subscriber statements in form number 2 filed electronically, statement of assets and liabilities of company duly certified as true and correct by the auditor, list of all secured creditors along with their consent to the conversion, approval of governing council, NOC from income tax authorities, approval from any other body authority as may be prescribed, and certificate of incorporation as LLP from ROC. अगर आपको कन्वर्ट करना है कंपनी से, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी से इनटू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो क्या प्रोसीजर होगा? A company other than a company registered under section 25 of Companies Act 1956 or section 8 of Companies Act 2013 may convert itself into a company limited by shares. Company seeking conversion shall have a share capital equivalent to the guarantee amount. Special resolution is passed by its members authorizing such a conversion, omitting the guarantee clause in its memorandum of association. Alter करोगे articles of association to provide for the articles as are applicable for a company limited by shares. A copy of special resolution shall be filed with registrar of companies, form number MGT 14 में, within 30 days from date of passing of same along with the fees. एप्लीकेशन फाइल करोगे फॉर्म नंबर INC 27 में, फाइल करोगे ROC के साथ within 30 days from the date of passing special resolution, enclosing memorandum of association और articles, amended articles of association. ROC उसके बाद डिसीजन लेगा on the application filed within 30 days, 30 दिनों के अंदर अंदर वो अपना डिसीजन लेगा upon approval of form number INC 27, और उसके बाद इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म नंबर INC 11B में. अगर आप कन्वर्ट करते हो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी से इनटू अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बाय शेयर्स और गारंटी, तो क्या प्रोसीजर होगा? रूल नंबर 37 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 के हिसाब से अगर आप कन्वर्ट करते हो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इनटू अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बाय शेयर्स और गारंटी, तो आपको पास करना है स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में और एक एप्लीकेशन फाइल करना है फॉर्म नंबर INC 2 में इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन सब रूल्स 2 and 3. कंपनी 7 दिनों के अंदर अंदर जब से उसने स्पेशल रिजोल्यूशन फाइल किया है जनरल मीटिंग में, पब्लिश करेगा नोटिस फॉर्म नंबर INC 27A में with proposed conversion in two newspapers,
पब्लिश करेगा 2 न्यूज़पेपर्स में, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में, और उसको वेबसाइट पे भी डाल देगा, कंपनी की जो वेबसाइट है, क्लियरली इंडिकेटिंग कि कंपनी जो है कन्वर्ट हो रही है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी से कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी बाय शेयर्स और गारंटी में। और ऑब्जेक्शंस मंगवाएगा कि किसी को भी अगर ऑब्जेक्शंस हैं तो वो अपने ऑब्जेक्शंस भेज दे। नोटिस में आपको ये भी देना है कि जो ऑब्जेक्शंस हैं वो मे बी इंटीमेटेड टू रजिस्ट्रार और कंपनी विद इन 20 days ऑफ डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ड्यूली इंडिकेटिंग नेचर ऑफ इंटरेस्ट एंड ग्राउंड्स ऑफ पोजीशन। कंपनी जो है विद इन 45 days ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करेगा एप्लीकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन सब रूल 1 फॉर इट्स कन्वर्जन इनटू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी along with the fees as provided in the company's rules 2018 company's registration offices and fees rules by attaching following documents। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं आपको? नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग along with explanatory statement, copy of resolution passed in the general meeting, copy of newspaper publication, copy of altered MOA as well as articles of association duly certified by any one of the directors duly authorized in this behalf, declaration signed by not less than 2 directors of the company including MD if any that such conversion shall not affect any debts, liabilities, obligations or contracts, a complete list of creditors, debenture holders to whom no individual notices have been sent। उसके साथ साथ आपको फॉलोइंग डिटेल्स भी देनी है जैसे कि नेम्स, एड्रेसेस ऑफ क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, nature and respective amounts due to them in respect of debts, claims or liabilities, declaration by a director of the company that notice as required has been dispatched to all the creditors and debenture holders with proof of dispatch, a declaration signed by not less than 2 directors of the company, one of whom shall be a managing director where there is one, to the effect that they have made a full inquiry into the affairs of the company and having done so they have also formed a opinion कि जो list of creditors है वो सही है और जो estimated value है as per the list of debts or claims payable वो proper estimate उसका लिया गया है और कोई भी जो debts है वो और claims है वो against, ऐसा नहीं है कि वो company की knowledge के against है। Declaration of solvency signed by at least 2 directors of the company, one of whom shall be managing director, where there is one to the effect that board of the directors of company have made a full inquiry into the affairs of the company, as a result of which they have formed an opinion that it is capable of meeting its liabilities and will not rendered insolvent within a period of 1 year from the date of declaration through a resolution passed in a duly convened meeting or by circulation. Company shall also obtain a certificate from the auditors that the company is solvent, है और and that it is a going concern as on the date of passing of resolution by the board certifying solvency as per clause H above. No objection certificate from sectoral regulator if applicable. No objection certificate from all secured creditors if any. डिक्लेरेशन साइन होनी चाहिए बाय नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर्स से कम में साइन नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग एमडी जहां पे एक है, और कोई भी कंप्लेंट्स जो है पेंडिंग नहीं होनी चाहिए अगेंस्ट द कंपनी फ्रॉम द मेंबर्स और इन्वेस्टर्स, और कोई भी जो इंक्वायरी है, इंस्पेक्शन है, इन्वेस्टिगेशन है वो भी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए अगेंस्ट द कंपनी या फिर उसके डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स के अगेंस्ट। रजिस्ट्रार शैल आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन एंड ऑब्जेक्शंस, अगर कोई भी ऑब्जेक्शंस आते हैं, इंश्योर करेगा कि कंपनी जो है उसने सेटिस्फाई करे हैं सारे ऑब्जेक्शंस को उसने एड्रेस करा है, और डिसाइड करेगा कि वेदर जो अप्रूवल है फॉर कन्वर्जन शुड और शुड नॉट बी ग्रांटेड, कि क्या जो कन्वर्जन के लिए अप्रूवल है वो ग्रांट होना चाहिए या नहीं ग्रांट होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंसिक्वेंट टू कन्वर्जन ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी into a company limited by shares or guarantee be in form INC 11A issued to the company upon grant of approval for conversion. Conditions comply होंगी subsequent to conversion. कंपनी जो है नेम चेंज नहीं करेगी for a period of 1 year from such conversion. कंपनी डिक्लेयर नहीं करेगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी कोई भी डिविडेंड विदाउट सेटिस्फाइंग पास्ट डेट्स, कोई भी जो पास्ट डेट्स हैं या लाइबिलिटीज है, ऑब्लिगेशंस हैं, उनको सेटिस्फाई किए बिना
डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एलिजिबल नहीं होगी कन्वर्ट होने में इनटू अ कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी, इनटू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी, अगर उसकी नेटवर्थ नेगेटिव है, अगर एप्लीकेशन पेंडिंग है अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013 फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ इट्स नेम, या कंपनी डिफॉल्ट में है in any of its annual returns or financial statements under the provisions of Companies Act 1956 or Companies Act 2013. Petition for winding up is pending against the company, or the company has not received amount due on call and shares from its directors for a period of not less than 6 months from the due date. कोई भी inspection, inquiry या investigation pending है against the company. Registrar of Companies shall take a decision on the application filed under these rules within 30 days from the date of receipt of application, complete in all respects. Conversion of LLP into a company. अभी हमने देखा था conversion of company into LLP. हाँ, तो ये कह रहा है कि बहुत सारे बिजनेसेस इंडिया में ऐसे हैं जो स्टार्ट तो होते हैं एज एलएलपी पर कन्वर्ट होना चाहते हैं फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, ताकि उनको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल सके या फिर वो इक्विटी कैपिटल मंगवा सके। तो जो एलएलपी है वो कन्वर्ट हो सकती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 366 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज ऑथराइज्ड टू रजिस्टर्ड रूल्स 2014 के अकॉर्डिंगली वो कन्वर्ट हो सकती है। प्रोसेस क्या होता है कन्वर्जन का? तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना होता है नेम के लिए। आप एक मीटिंग बुलाओगे पार्टनर्स की, ताकि आप सारे जो मेजॉरिटी पार्टनर्स हैं उनका अग्रीमेंट ले सको कि वो कंफर्म कर रहे हैं ना कन्वर्ट करने के लिए। ऑथोराइज करना है आपको वन और मोर पार्टनर्स को, ताकि वो सारे स्टेप्स ले सकें जो भी नेसेसरी हैं और एग्जीक्यूट करें पेपर्स, डीड्स, डॉक्यूमेंट्स परसुएंट टू रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी एज अ कंपनी। वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ये है जब आप बिजनेस कोई भी रन करते हैं अंडर द सेम नेम एज दैट ऑफ द एलएलपी, कि आप जो वर्ड्स हैं लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वो ऐड कर सकते हैं। द नेम वंस एक्सेप्टेड बाय द अथॉरिटी विल बी वैलिड फॉर 60 डेज। जब आप का जो नेम है कंपनी का वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो वैलिड रहेगा 60 डेज के लिए। सिक्योरिंग डीएससी एंड डिन, अगर 7 मेंबर्स हैं टोटल who are future directors of the company after conversion और उनके पास डीएससी या डिन नहीं है, तो उनके लिए आपको डीएससी और डिन ऑब्टेन करना पड़ेगा। डिन ऑब्टेन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना पड़ेगा ऑन एमसीए पोर्टल। डिन एप्लीकेशन इज प्रोसेस्ड एंड अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द ऑफिस ऑफ रीजनल डायरेक्टर एमसी या फिर एमसीए। जो फॉर्म है वो आपको कंपनी करना है बाय सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस प्रूफ एंड आइडेंटिटी प्रूफ। उसके साथ आप अटैच करोगे 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। All the required documents should be attested by practicing cost accountant or practicing chartered accountant or practicing company secretary. File करोगे आप form URC1 after getting the approval of name from ROC। आप application आप prepare करोगे और file करोगे form URC1 with the following documents। कौन-कौन से documents लगाओगे आप? List of the members with various details with names, address, shares held by them appropriately. List of the first directors of the private company with various details जैसे कि names, address, PIN, passport under expiry date. Affidavit from every person proposed as first directors that he is not banned to be a director under section 164। और जो सारे documents हैं वो registrar के साथ file होंगे। For registration of firm must contain information which is complete and correct and true to the best of knowledge and belief। एक लिस्ट लगाओगे including names and addresses of partners of LLP and copy of LLP agreement and certificate of registration duly verified by 2 designated partners of LLP must be enclosed। A statement indicating the following specifications: nominal share capital of firm, number of shares into which it is separated ये लगाओगे,
number of shares taken and the amount paid for every share, name of the firm with the addition of word limited or private limited, written consent लगाओगे, no objection certificate from all creditors लगाओगे, copy of newspaper advertisement, statement of accounts of company which must be 6 days preceding, which must not be 6 days preceding the date of application, और उसके साथ आपको लगाना है certification by the auditor, written consent from majority of members whether present in person or by proxy at a general meeting agreeing for such registration, and undertaking that the proposed directors shall comply with the requirements of the Indian Stamp Act 1899 as applicable, a copy of income latest income tax return of LLP or firm as the case may be. In case of application limited by a limited liability partnership or firm for registration as a company limited by guarantee or as an unlimited company, a list showing names, addresses, occupations of all persons who on a day not being more than 6 clear days before the day of seeking registration were partners of LLP or firm, और उसके साथ proof of membership, एक list showing that the particulars of persons proposed as the first directors of the company along with then passport number, expiry date अगर हो चुकी है तो, residential addresses and their interest in other firm or body corporate along with their consent to act as directors of the company. In case of a firm, deed of partnership, bylaws or other instrument constituting or regulating the company, and in case the deed of partnership was revised at any time in the past, copies of the principal and all subsequent deeds, including the latest deed, along with the certificate of registration issued by registrar of firms, in case the firm is registered. Written consent या NOC from secured creditors. Written consent from majority of members, whether present in person or by proxy at general meeting. Copy of latest income tax return of LLP or firm. Registration of society as a company limited by guarantee under Section 8. Registration of trust as a company limited by guarantee under Section 8. कोई सोसाइटी जो है वो रजिस्टर होना चाहती है एज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अंडर सेक्शन 8, तो उसमें आपको लगाना है एक लिस्ट शोइंग नेम्स, एड्रेसेस, ऑक्यूपेशंस ऑफ ऑल पर्संस हु ऑन अ डे नॉट बीइंग more than 6 clear days before the date of expiry of before the day of seeking registration were members of the society with proof of membership. A list showing the particulars of persons proposed as the first directors of company along with DIN, passport number if any, with the expiry date, residential addresses and their interest in other firms or body corporate along with their consent to act as directors of company. A list containing the names, addresses of members of governing body of the society, a certified copy of certificate of registration of society, written consent or no objection certificate from all the secured creditors of the applicant, written consent from majority of members, whether present in person or by proxy at a general meeting, agreeing for such registration, and the resolution shall also provide for declaration for amount of guarantee, and undertaking that the proposed directors shall comply with the requirements of Indian Stamp Act 1899 as applicable, a copy of latest income tax return of the society, details of the objects of company along with a declaration from all the members that restrictions and prohibitions clause B or C में जो है subsection 1 of section 8 के वो comply हुए हैं या नहीं. Now comes registration of a trust as a company limited by guarantee. कोई trust है उसको register होना है as a company limited by guarantee under section 8.
तो उसको लगाना है a list showing names, addresses, occupations of all persons who on a day not being more than 6 clear days before the day of seeking registration, but trustees of the trust with proof thereof. A list showing particulars of persons proposed as the first directors of the company along with then passport number, if any, with expiry date, residential addresses and their interest in other firm or body corporate along with their consent to act as directors of the company. A certified true copy of the certificate of registration of the trust and the trustee. Written consent or no objection certificate from all secured creditors of the applicant. Written consent from majority of members, whether present in person or by proxy at a general meeting, agreeing for such registration, and the resolution shall also provide for declaration for amount of guarantee. An undertaking that the proposed directors shall comply with the requirements of Indian Stamp Act 1899, a copy of latest income tax return, details of objects of the company showing declaration from all the members कि जो सारे restrictions हैं और prohibitions हैं clause B और C में subsection 1 of section 8 वो सारे comply हुए हैं या नहीं हुए. इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 12 का रिवीजन हो चुका है. अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 के लिए मिलेंगे. सो गाइस, आई होप आपको ये रिवीजन अच्छे लगे हों, और आपको अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए. और आपको जो और सारे चैप्टर्स हैं उनके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. मैंने सभी चैप्टर्स के नोट्स डाल दिए हैं. इस चैप्टर के मैंने नोट्स नहीं डाले हैं क्योंकि मुझे लगा ये आपको बुक से करना चाहिए. अगर आपको इस चैप्टर के भी नोट्स चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. अगर मेरा टाइम अलाउ करेगा तो आई विल श्योरली प्रोवाइड यू द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो. तो गाइज, आई होप आपको ये पसंद आए हो. अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए आप लिंक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. थैंक यू. बाय.